हाँ चलो, we'll start. Good morning, dear students. Today we are going to discuss once again upon the proportions. As I have already sent you 4 lectures upon the proportions, now we are going to make the discussion upon the proportions. I hope that you will give answer. If you have any doubt, you will say here. Any type of doubt if you have. Okay. Is the slide visible? Is the slide visible? Okay. Give the answer. Okay. Give the answer. हाँ, आपको देखना है यहाँ किस जगह मतलब रॉन्ग है, किस जगह करेक्शन है, तो उसको ठीक करना है. यानी करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस जल्दी जल्दी अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन, क्योंकि आज हमारा टॉपिक प्रोपोर्शन है. आपको प्रोपोर्शन के लिहाज से देखना है. करेक्ट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, देयर इज नो यूज टू. नहीं, टू नहीं. फिर क्या, इसके बदले क्या? हेलो, डिड यू हियर मी? हेलो, वेरी गुड. जल्दी. यस यस यस, वेरी गुड. देयर इज नो यूज इन गिविंग देयर एट दिस टाइम. इन गोइंग देयर. देयर इज नो यूज इन गोइंग देयर एट दिस टाइम. वेरी गुड, वेरी गुड. अंशी गुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, नेक्स्ट वन. जल्दी. ही कंप्लेन्स फॉर हेडेक. फॉर देखना है, ये ठीक नहीं है. इसकी जगह और कुछ इस्तेमाल करना है. फॉर के ही अल्फाबेट को थोड़ा इधर उधर करना है और एक अल्फाबेट काटना है. वो भी मैंने ऑप्शन दी है आपको. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ही कंप्लेन्स ऑफ हेडेक. वेरी गुड, वेरी गुड. ऑफ हेडेक. यस, थर्ड. My mother is anxious for your welfare. फॉर गलत है. फॉर की जगह और कुछ लिखना है. जल्दी, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आज से मतलब वीडियोस शॉर्ट में रहेंगे, लंबे नहीं ज्यादा रहेंगे. और जो भी वीडियो आपका अब आएगा तो वो शॉर्ट होगा, टू द पॉइंट होगा, और वहाँ इधर उधर की बातें नहीं होंगी, और वो इंग्लिश में ही होगा. क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने अच्छी सजेशन दी है. उन्होंने कहा कि सर वो इंग्लिश में ही रखो, हम क्लास में तो उर्दू में डिस्कस कर सकेंगे, मगर तो वीडियो इंग्लिश में ही होने चाहिए. और मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, आप अपने सजेशन रखो, तो देखेंगे किसकी सजेशन अच्छी होगी तो वो मैं फॉलो करते जाऊंगा. हाँ, वेरी गुड. माई मदर इज अनक्शियस अबाउट युवर. About, very good, very good. About your welfare. Very good, very good. हाँ, they went to Ferozpur in bus. हाँ, इनमें चेंज करना है. मैं आपको क्लिप भी दे रहा हूँ यहाँ से ही कि कहाँ गलती है. वहां कोई आपको क्लिप नहीं देगा. एग्जाम में आपको खुद सर्च करना है कि प्रपोर्शन कहाँ उसने यूज किया है और कहाँ इसकी गलती है. जल्दी. वेरी गुड, वेरी गुड. दे वेंट टू फिरोजपुर बाय बस. वेरी गुड, वेरी गुड. जल्दी. I am writing the essay on green ink. जल्दी देखो गलती कहाँ है. ये मैंने कल भी आपको नहीं, आप दूसरे सेक्शन जो 1240 पर है उनको मैंने दिखाया है. अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप वेरी गुड, वेरी गुड. आप बहुत आसानी से यहाँ जवाब दे सकेंगे. वेरी गुड. I am writing the essay in green ink. वेरी गुड.
वेरी गुड। ये हमने कल भी किया था। वेरी गुड। 6th, I met Meena upon the way to my office. जल्दी। अपान आपको मालूम है ये क्या दिखा रहा है? ये मूवमेंट दिखा रहा है, क्योंकि उसके साथ आन आप भी हैं और आन भी हैं। ये कंपाउंड है, इसको थोड़ा चेंज करना है, सिंपल में लिखना है, इसी के वर्ड्स लिखने हैं, थोड़ा दो काटने हैं अल्फाबेट्स। वेरी गुड। आई मेट मीना ऑन द वे टू माई ऑफिस। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, 7th। Very good. The police caught the thief by the arm. Yes, very good. The police caught the thief at the arm. वेरी गुड, वेरी गुड। आपको आ रहे हैं, मुझे इतनी सख्त से कहना पड़ा हो कि आप जवाब दे रहे हो। आप ये यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है वो अलग बात है, क्योंकि मतलब यहाँ तो इसका ऑप्शन नहीं है कि आपकी बात रिकॉर्ड हो सकती है। हाँ। द जग इज फुल विद मिल्क। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अहमद अकील, वेरी गुड। द जग इज फुल ऑफ मिल्क। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। माई वाइफ इज गुड इन फ्रेंच। ये भी हमने कल उस वाले सेक्शन में पढ़ा था, अगर आपने वीडियो देखा होगा। इनको चेंज करना है जल्दी। वेरी गुड। माई वाइफ इज गुड एट फ्रेंच। वेरी गुड, वेरी गुड। ही डज नॉट एग्री टू मीट मी इन दिस मैटर। वेरी गुड। ही डज नॉट एग्री टू he does not agree with me in this matter. He does not agree with me in this matter। 11th। ये भी मुझे लग रहा है 11th भी हमने कल शायद किया। सुरेश वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर। जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है भाई यार, वेरी गुड। सुरेश वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे ने अच्छा कहा है। वेरी गुड। हाँ, he should be alive for the consequences of his wrong actions। फॉर को चेंज करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ही शुड बी अलाइव टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज रॉन्ग एक्शंस। क्या बात है, आप बहुत जवाब दे रहे हो, बढ़िया जवाब आप दे रहे हो। मुझे मालूम नहीं था आप इतने काबिल हो, मगर मैं बार बार कह रहा हूँ ये बदकिस्मती है, यहाँ आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, वो तो अलग बात है, वो तो आपको मालूम है। हाँ। 13। एवरीबॉडी इज आंसरेबल टू हिज सिन्स। ये भी हमने कल किया था, उस वाले सेक्शन में ये भी हमने किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। एवरीबॉडी इज आंसरेबल टू गॉड फॉर हिज सिन्स। वेरी गुड, वेरी गुड। यार यहाँ तो गॉड नहीं है, अब ऐसे भी हम लिख सकेंगे फॉर हिज सिन्स। यू मस्ट अटेंड ऑन व्हाट ही सेज।
Very good, very good. You must attend to what he says. Very good, very good. This city abounds from thieves. हाँ, very good. This city abounds with इन thieves. दोनों ठीक है. With भी in भी. मुझे लग रहा है आपको बहुत होल्ड हुआ है. आप इन पर अगर आप चाहें तो आप यहाँ स्क्रीन शॉट उठा सकेंगे. आप यहाँ थोड़ा है तो आप इनको खुद भी कर सकेंगे. आप मैं दूसरा आपको दिखाऊंगा दूसरा स्लाइड, क्योंकि हमें आप टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है. यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट. स्क्रीन शॉट आपने उठाया? हेलो, स्क्रीन शॉट उठाया आपने? ओके, क्योंकि टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है. ज़्यादा बड़ी भी वीडियोस नहीं बननी चाहिए. आप ब्लैंक से, आई होप दैट यू विल डू देम वेरी क्विकली. I hope that you will do them very quickly. You are trying to drag me dash a controversy. जल्दी. वेरी गुड, क्या बात है भाई गार. वेरी गुड इंटू. वेरी गुड इंटू. Very good. I complimented him dash his brilliant success in the examination. जल्दी. ये आपको आएगा मुझे मालूम है. वेरी गुड ऑन. वेरी गुड, क्या बात है. ऑन ऑन ऑन. वेरी गुड. बहुत सारे ऐसे भी जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, he was heartbroken dash Mary's indifference to him. जल्दी. वेरी गुड ऑन. वेरी गुड, क्या बात है भाई का. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सब ठीक है, सब ठीक है. ये भी आपको आएगा. फोर्थ, ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश डैश तेलुगु इनटू. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है. सबका जवाब ठीक है. इनटू. फिफ्थ. हाँ, this accommodation is not adequate dash the needs of our family. वेरी गुड. टू. वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है. आपको तो आ रहा है. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट बिकॉज आई ऑलवेज सेज दैट नाउ द वीडियोज विल बी वेरी शॉर्ट on the insistence of the some students that said the video should not be so much long because so much lengthy, because then it becomes boring. I hope that you have taken the screenshot. Have you taken the screenshot? Okay, I will share another slide and you will take screenshot of that also. If you will not be able to solve any of these blanks, I have already told you that you can say tomorrow or you can call me for that. This is another. Please take it a screenshot and follow it is exercise. मे बी अगर किसी जगह साफ नहीं आएगा तो वो बात नहीं, वो आप नहीं भी करेंगे तो उसका चलेगा, मगर बाकी तो यहाँ मतलब थोड़ा मुझे मालूम है कि दिक्कत होती है थोड़ा किसी जगह. हाँ, यू कैन टेक इट स्क्रीन शॉट. ओके, नाउ आई विल
Share another slide. Mute yourself. Mute yourself. Mute yourself. मुझे लग रहा है अब ये वाला करना है. Take the screenshot of this also. This is exercise for you because I have already told you that here you have to do more exercise in case of prepositions because there are not more rules. Still, I will send you one or two lectures upon the prepositions. There are few rules for some prepositions because we can't do all the rules of all the prepositions. Prepositions are unlimited. They are not like the articles and they are unlimited. Please wait, I will share another one. I think that you had done this. Now this. Take the screenshot of this one. शाहिद मकबूल, हाँ आपने हैंड रेज किया, क्या बात है? कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है? शाहिद, हेलो शाहिद. शाहिद शाहिद तो शाहिद ही है. शाहिद, कोई डाउट है, कोई सजेशन है? 1 सेकंड. ओके 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 ओके, मैंने सोचा आपने तो हैंड राइज किया है, क्या मतलब. हाँ, this is another one. Take it screenshot also because I always say you that here you have to do more exercise. Here you have to do more exercise. The more exercise you will do, the more you will understand. It will be beneficial for you. Then it depends upon you. I will provide you the material. Then आप देखिए या नहीं देखिए, मैं आपके मटेरियल दे के रखूंगा आपको, फिर कभी ना कभी आपको ये काम आएगा. हाँ, इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको कोई जरूरत नहीं है कोई ग्रामर लाने का, क्योंकि मैं बहुत सारी ग्रामर कंसल्ट कर रहा हूँ. मेरे पास, मुझे लग रहा है मेरे पास थाउजेंड्स में ग्रामर है, थाउजेंड्स में. तो जहां मुझे लग रहा है कि कोई भी टॉपिक अच्छा हो, मैं वहां डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ. तो आपको ग्रामर लाने का कोई जो, बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर मुझे कह रहे सर हमें ग्रामर कोई सजेस्ट करो. मैं बार बार कह रहा हूँ आपको ग्रामर लाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही ग्रामर से कंप्लीट बात नहीं होती है. मेरे पास बहुत सारे हैं. आई कैन शेयर इन योर ग्रुप आल्सो. आई थिंक दैट इट इज सफिशिएंट टुडे, क्योंकि मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि फिर आप बोर होते हैं जब ज्यादा बड़े होते हैं लेक्चर्स. अब मैंने यही कंसंट्रेशन में रखा है कि लेक्चर्स शॉर्ट में रखेंगे और टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें नहीं होगी डिस्कस क्लास में. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. बट once again, please send the feedback. Your feedback will be acceptable. If it may be positive or negative. फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो ये सलीम सर्स एकेडमी है, आप यूट्यूब पर जा सकेंगे, वहां आप देख सकेंगे वीडियोस, जो भी लेक्चर आप देख सकेंगे. जिसमें भी आपको कोई कमी लगेगी, किसी भी जगह आपको समझ में नहीं आएगा, तो मुझे उम्मीद है आप फीडबैक सेंड करें. थैंक यू.